India stretches between Kashmir in the north and Kanyakumari in the south, Gujarat in the west and Bengal in the east. This is Manipur. And this is where history was written for India. Let's hear from our Prime Minister. आपने देखा होगा टीवी पे अखबार में मणिपुर में ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों तक कोरोना के टीके तेजी से पहुंचाए गए जहां इंसानों को पहुंचने में बहुत देर लगती है। मोदी जी ने जो ड्रोन पॉलिसी लाई वो ड्रोन पॉलिसी का उपयोग करके ये पहला प्रयोग हुआ। That sounds like a scene from a sci-fi movie. Let's see how ICMR along with DayBest was able to solve a big problem. The Indian Council of Medical Research is more than a century-old research body involved on various communicable and non-communicable diseases over the last 100 years, contributing to the health of the nation and of its citizens and guiding the program or the ministry to deliver the best possible for the citizens of this country. ICMR was posed with a great challenge. It was to deliver vaccines in the farthest corners of India. This COVID pandemic has totally consumed not only the entire ICMR scientists but also the entire resources within the country for taking care of the health of the citizens. What these vaccines do, they help one not to progress to a severe form of the disease or to require oxygen or to get admitted in the hospitals following infection. So it is all the more important how quickly we achieve considerable coverage in the eligible population groups, which is adult population as of now in India. COVID vaccination drive in India is reaching its peak phase. But still, there are a few challenges in vaccinating the entire population. There is a need for the delivery of the medicines or the delivery of the other diagnostic, the collection of the samples also. And one of the challenges was how to deliver the vaccines in remote areas. The solution came in the form of a UAV, or generally called drones. This is the first time that it is being flown in a vertical limit along the terrain areas, hard to reach areas. But why are we trying to do this by drones, you ask? The answer is difficult terrains. But that's not the only challenge our teams were facing in this project. We have done some qualitative assessment in which the state stakeholders and the district stakeholders, they are very positive about this ongoing project. Actually here we are flying from land to land, land to island, land to foothills, land to valley and land to hill. So that will set up a model in India which will help us in future to deliver healthcare deliveries in forest areas, rural areas, difficult areas, and this would be really helpful for the people of India. Well, flying drones was really difficult and it requires several regulatory approvals. We cannot flout any of the rules. We were hell-bound that we will follow. It might take some time, but we were bound to follow all the rules and regulations laid down by the regulatory approvals.
We took the permission from forest, we took the permission from state police, we took permission from army because that is an army area. The other part of difficulties were the communication with them and the local transportation, network issues, the tough terrain. एक बारी के लिए तो वैक्सीनेशन के लिए लोग आ ही नहीं रहे थे और एक दिन इतना ज़्यादा टर्नआउट हो गया वहाँ पे कि वहाँ पे सिर्फ 3 स्टाफ्स थे वैक्सीनेट करने के लिए और वहाँ 700 लोग आ गए एकदम से। और वहाँ वैक्सीनेशन इवन दो शॉर्टेज नहीं है मणिपुर में, बट वहाँ पे वैक्सीनेशन का भी शॉर्टेज हो गया एंड देन उनको 2-3 घंटे में कैसे भी करके अरेंज करना पड़ा। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्राउड मेंटेन करना, सब कुछ उधर उनको सिक्योरिटी की हेल्प लेनी पड़ी, पुलिस सिक्योरिटी की, जिससे उनको वो मेंटेन कर पाए। यामना नुंगाइबा फावे हाइबदी समाइना अमफोक तौबजे हंदक्सिना अहानबो ओरंगमनिबा समाइना ड्रोन का पाया तौबजे अदुना हाना तवंदो मवंग तौबसे यामना नुंगाइबा अम फावे। Training the healthcare worker was the most challenging part for me, where I have to ensure that they can do these things independently of me, so when I am not available in the primary health center. The ICMR team had figured out the on-ground challenges. But the main problem, which was to use drones for this delivery, was still a mystery. That's when Team Daybest, along with its partners, came to the rescue. We had IIT कानपुर जिसने कहा कि हम स्टार्टिंग करेंगे इस ड्रोन प्रोजेक्ट को और हम एक ट्रायल करेंगे, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था जब ड्रोन से वैक्सीन को डिलीवर किया गया। तो हमने IIT कानपुर के साथ में एक छोटा ड्रोन बनाया। We floated a tender just to be transparent and explore all the possible vendors who can join hands with ICMR in this endeavor, and through a very transparent processes we have selected Daybest as our partner to help us in establishing this drone based vaccine delivery system as one of the viable delivery system. Daybest के बिना हम भी ये पॉसिबल नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं कि ये इवेंट साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार हुआ है, तो इट मीन्स इट शुड हैव सम डिफिकल्टीज, और ऐसी डिफिकल्टीज जिसको अब तक कोई पार नहीं कर पाया है। आज देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्वामित्व योजना और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ताकत से पहले भारत के गांवों को समृद्ध किया जाए। अभी भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अर्बन साइड तक ही डेवलप है। ऐसा नहीं कि सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टार्टअप नहीं था जो ह्यूमन वैल्यू को साथ रखते हुए टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाए। आज भी हमारे देश में 30% से ज़्यादा मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि समय पे ब्लड नहीं मिल पाता है, समय पे उनको वो दवा नहीं मिल पाती है। तो पूरे देश में 75,000 से ज़्यादा PHC को कैसे हम कनेक्ट करें, तो इसके लिए हमने पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। The drone has a capacity of being able to carry 2 to 3 kgs in one single flight. We are using the drones which were initially used for agriculture purposes. तो ड्रोन डेवलपमेंट करने के साथ साथ मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर था कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वर्जन में नहीं रहेगी या बहुत ही एलाइट ग्रुप में ही नहीं रहेगी, मुझे उस टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना है। This is the first time in history of India, together ICMR and Daybest is creating history. This is the first trial sortie and we are expecting our aircraft soon to be landed at Karang. We are one of the foremost helicopter UAVs manufacturers in India.
much agile, much maneuverable, and at like this in northeast difficult terrain. These are the sweet little machines of mine which are going to fly tomorrow and deliver vaccines and save lives. Others, sir, he was known as, James Bond of air modeling. I started this as a hobby 25 years ago, and the hobby is turned into passion, and now before it turned into my profession, it turned into my obsession. Howji akoi drone da hidak mayam ama pura laani adu drone da porok hidak sina akoi miyoi khudimuk da vaccine kapthoga anaba corona ji phabo oirasinu oidana thamjage. It's a very complex terrain, but these autonomous flying vehicles are designed and built in such a way that they can able to do this task. And then realize that there's this need of a back-end digital infrastructure that can actually support these unmanned robotic systems at scale, because that is where both the economic feasibility as well as the impact will kick in. हम लोग जब बिजनेस स्ट्रेटजी का डिस्कशन कर रहे थे उसी वक्त हम लोगों ने एक क्लियर कर लिया कि हमें एक तरफ टेक्नोलॉजी में भी पायोनियरिंग करनी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी अवेलेबल करनी है, बट साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी करवाना है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। EVAS is happy to be partnering with Daybest, building infrastructure for massive drone operations across the world. टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारी चीज़ों से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है सो अभी भी गैप में है। I lost my father, so due to the unavailability of medicines in the primary health care center, so which is in our village. So I hope that the implementation of this project will ensure that none of the sons of our country will lose their father. जितने लोग हैं सारे लोग कोई मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं आए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि हम जब घर फ़ोन करते हैं बोलते हैं अरे हम डॉक्टर सर के साथ काम कर रहे थे। हमारे घर में यही एक सेलिब्रिटी टाइप का फीलिंग होता है। I could see here and there in the team managing the drone team and the team from ICMR and all. So I was the only female there. And still the people there are very understanding, they're very respectful and have always supported me. And I also want to thank our team at ICMR headquarters and also the Daybest team. After conducting rigorous trials and ensuring all safety measures are implemented, the teams are ready for the final day. We hope our Honorable Prime Minister's dream of New India will be able to fulfill with launching of iDrone. The drone took off when the health minister pressed the button. The event was a huge success. भारत माता की जय।
कोविड वैक्सीन सी अतेन मतमदा असांगबा मनु हंजने लेबु मफम से याम तुना दुगा खर रिमोट प्लेसेस सिंग ददी मदुगी वैक्सीन की पुबगी पुथोक पुसिन तौबसी लंबी गुंबा करी गुंबा खरा अराप मफमददी मदुगी डिफिकल्टीज खरदी दुम लेरंगद्राना हाई खंजे We are wasting a lot of money and vehicles transporting these vehicles to the very difficult areas. Now if this become operationalized, it will save manpower, it will save money. This is a wonderful project. I really feel proud of technology developed by DBS and this one ICMR project. The potential is far beyond vaccinations, and the kind of use that will be possible for various healthcare activities makes us really optimistic and happy. माननीय प्रधानमंत्री जी का ICMR का इन सबका और जो डॉक्टर्स की टीम ICMR की इधर से आई हुई है उन सबका धन्यवाद करते हैं। एक ड्रोन का उपयोग से पहली बार वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से उठा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर कारंज तक पहुंचाया गया। आज पहली बार देश में और साउथ एशिया में ड्रोन का कॉमर्शियल यूज हुआ है। जिस प्रकार से देश में टेलीकॉम की क्रांति आई, जिस प्रकार से देश में हरित क्रांति आई, उसी प्रकार से देश में एक नई एरोस्पेस की क्रांति आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग एक इनिशिएशन कर रहे हैं। दूर सुदूर क्षेत्र में आवश्यक चीजों को पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का उपयोग हो सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकती है। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। घर की मैपिंग के अलावा पूरे देश के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स, सर्वे, डिमार्केशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में ड्रोन बहुत काम आने वाला है। ये ड्रोन्स भारत के भाग्य को आसमान की नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं।